Hello students, welcome to my channel Incredible Scholars। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस तरह से हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई with the Dandi March. Then it spread to many different parts of the country. किस तरह से लोगों ने इस मूवमेंट में enthusiastically पार्टिसिपेट किया। इन कोर्स ऑफ टाइम ये मूवमेंट जो है वो वायलेंट हो गया एंड एट दैट टाइम Mahatma Gandhi entered into a pact with the Viceroy, Lord Irwin, or as per the condition of that pact, Mahatma Gandhi participated in the second roundtable conference on behalf of the Indian National Congress. इसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमारे जो डिफरेंट ग्रुप्स के जो लोग थे, चाहे वो हमारे रिच पेजेंट्स थे, पुअर पेजेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेस क्लास के लोग थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और विमेन, उनका क्या रिस्पॉन्स था टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में। Till now, if you have not gone through those videos, just go through them because they all include the important questions, important topics, जिस पर हमारे important questions जो हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिल सकते हैं। Now we are going to discuss the next important part of this chapter, important topic of this chapter, that is the limits of civil disobedience movement. इस particular topic में हम discuss करेंगे about some groups, especially about the Dalits, that means the depressed class people, as well as the Muslims. How did they respond to the call of the civil disobedience movement? First of all, we are discussing about the depressed class people. Depressed class people. Depressed class people, they did not respond much enthusiastically to the call of the civil disobedience movement. The depressed class people or the low caste groups, as we know, that they were denied from an equal access to the public facilities which were available to the others. For example, they were not allowed to enter into the temples. They could not take water from the public wells, from the public tanks. Access to education was denied to them. They could not live in the areas which were meant
or which were mainly the residential areas of the higher caste groups. जो हाई कास्ट ग्रुप्स थे उन एरियाज, जिस एरियाज में वो रहते थे उन एरियाज में डिप्रेस क्लास के लोग, उनको अलाउड नहीं था. So many such a kind of social restrictions were placed over them. They could not change their professions. वो अपने profession को change नहीं कर सकते थे. That's why they were remained poor. और इन सारी चीजों का जो वर्स्ट फॉर्म था, that was the practice of untouchability. That means it was believed, it was a common belief in the society, rather I should say among the people of so-called high caste groups, that a touch to these low caste people may impure them. इससे वो क्या होंगे? impure होंगे. By around 1920s, they began to call themselves as Dalits. उन्होंने अपने आप को दलित्स कहना शुरू कर दिया था. For a long time, Congress was reluctant to raise the issues related to the Dalits. इन दलित से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उनको वो रेस करने से कांग्रेस जो है वो घबराती थी. रीजन क्या था? fear of losing the support of the upper caste orthodox Hindus. जो अपर कास्ट ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे वो कहीं उससे नाराज ना हो जाए, कांग्रेस से नाराज ना हो जाए, इस डर से कांग्रेस जो है वो दलित्स को अपने मूवमेंट में शामिल करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी और ना ही वो उनसे रिलेटेड इश्यूज को रेज करती थी. बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड, लेकिन महात्मा गांधी ने ये कहा दैट इंडिया could not become independent for the next 100 years if untouchability was not abolished. अगर अनटचेबिलिटी को रिमूव नहीं किया जाता है, इसको एबोलिश नहीं किया जाता है,
तो अगले 100 सालों तक भी इंडिया को आजादी नहीं मिल सकती। He began to call the Dalits, उन्होंने दलित्स को हरिजन का नाम दिया। हरिजन, दैट मीन्स द सन ऑफ गॉड। He organized सत्याग्रह for their entry in temples, in schools, or to have an access to public wells and tanks। उन्होंने जो है वो कुछ सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए, उनको लीड किया, और इन सत्याग्रहों का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि भाई ये जो हमारे दलित लोग हैं जिनको वो हरिजन कहते थे, उनको टेंपल एंट्री मिले, मंदिरों में उनको एंट्री मिली, उनको स्कूल में एंट्री मिली, और साथ ही साथ उनको पब्लिक वेल्स और टैंक से पानी लेने का भी राइट मिले। महात्मा गांधी, उन्होंने डिप्रेस क्लास के लोगों के वर्क को डिग्निफाई किया, और इवन in order to dignify the work of a sweeper, he himself cleaned the toilets in his ashram। उन्होंने जो है वो एक स्वीपर के वर्क को डिग्निफाई करने के लिए अपने आश्रम के टॉयलेट्स की सफाई खुद करना शुरू किया। He asked the people of upper caste to change their heart and gave up the sin of untouchability। उन्होंने अपर कास्ट के जो लोग थे उनसे ये अपील की, उनसे ये कहा कि वो अपना हृदय परिवर्तन करें और ये जो अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का जो पाप है, इसको वो खत्म करें, इसको वो छोड़ दें। यानी कि महात्मा गांधी ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि भाई जो हमारे डिप्रेस क्लास के लोग हैं, या जो हमारे दलित्स हैं, या जो हरिजन्स हैं, जैसा कि वो कहा करते थे, तो ये हरिजन्स जो हैं वो हमारा मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बने, उनका मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ एक प्रॉपर इंटीग्रेशन हो, उनको सोसाइटी के अंदर इक्वल राइट्स मिले, उनका एम्पावरमेंट हो। लेकिन जो
पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो हमारे डिप्रेस्ड क्लास लीडर्स, डिप्रेस्ड क्लास लीडर्स, इनका क्या मानना था? दे वर थॉट ऑफ अ डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर देमसेल्व्स। वो अपनी कम्युनिटी के लिए एक कुछ अलग ही सॉल्यूशंस उनके दिमाग में था, टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ देयर कम्युनिटी मेंबर्स। व्हाट वर दे वांटेड? वो ये चाहते थे, दे वर वांटेड reservation in educational institutions and separate electorates in the elections for central and provincial legislative councils और assemblies। उनका यह मानना था कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, ओनली दैट वुड बी द सॉल्यूशन टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास पीपल। उनका यह मानना था कि भाई जब तक उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, तब तक उनकी कम्युनिटी जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती। दैट मीन्स दे वर वांटेड द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ देयर कम्युनिटी। ओनली देन दे वर थॉट द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कम्युनिटी कुड बी सॉर्टेड आउट। देयरफॉर when the Civil Disobedience Movement was began, the depressed class people, the depressed class people did not respond with enthusiasm, especially in Maharashtra, where the Dalit movement was strong। यानी कि उस रीजन में, महाराष्ट्र में बेसिकली जहां पर दलित मूवमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उस रीजन के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। यानी कि डिप्रेस क्लास के लोगों ने बहुत ज्यादा उसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया। इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी had a clash with Dr.
B.R. Ambedkar over the question of separate electorates for the depressed classes. Actually, Dr. B.R. Ambedkar here founded the Depressed Class Association. डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का इन्होंने फॉर्मेशन किया था इन 1930, राइट। और जब ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए इंग्लैंड में गए तो वहां पर उन्होंने दलित्स के लिए या डिप्रेस क्लास के लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या थे? व्हाट वर दीज सेपरेट इलेक्टोरेट्स? ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम वेयर द candidate of a particular community contest the election and only the voters of that community वोट। यानी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो कैंडिडेट्स होते थे वही उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करते थे और केवल उसी कम्युनिटी के लोग ही वोट किया करते थे। जब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए डिमांड किया फॉर डिप्रेस्ड क्लास पीपल, महात्मा गांधी प्रोटेस्टेड। महात्मा गांधी ने इसको प्रोटेस्ट किया बिकॉज महात्मा गांधी ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि अगर डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाएंगे तो इससे उनका सोसाइटी में, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन स्लो पड़ जाएगा। इन 1932 the British government accepted the demand for separate electorates. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दलित्स की या हम कहें डिप्रेस क्लास लोगों की जो डिमांड थी फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, तो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए ये जो डिमांड थी किसकी, सेपरेट इलेक्टोरेट की, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका अनाउंसमेंट किया तो महात्मा गांधी ही स्टार्टेड हिज फास्ट अनटू डेथ। महात्मा गांधी ने इसके प्रोटेस्ट में अपना फास्ट अनटू डेथ यानी कि हम कह सकते हैं आमरण अनशन की उन्होंने शुरुआत कर दी। ठीक है, तो इन प्रोटेस्ट महात्मा गांधी जी began
his fast unto death, fast unto death in पूना. पूना में उन्होंने अपना फास्ट एंड टू डेथ शुरू कर दिया. जब ऐसा हुआ तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैड एक्सेप्टेड हिज व्यू. उन्होंने उनके स्टैंड को, उनके व्यू को एक्सेप्ट किया एंड a pact was signed, that is what we call Pune Pact. It was signed between Gandhi ji and Dr. Ambedkar in September 1932. As per this pact, Dr. Ambedkar gave up his demand for separate electorates for depressed classes, and the Congress promised reserved constituencies for depressed classes in future legislative assemblies. So this was how this issue related to depressed classes was to be settled finally through a pact signed between Mahatma Gandhi and डॉक्टर बी आर अंबेडकर. ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे व्हाट वाज द रोल महात्मा गांधी प्लेड एज अ सोशल रिफॉर्मर. तो अगर ये क्वेश्चन आता है, यू कैन जस्ट मेंशन द पॉइंट्स कि भाई महात्मा गांधी he had appealed the people to give up the sin of untouchability. He declared that India could not win independence for the next 100 years if the sin of untouchability was not abolished. He had started many satyagraha for the purpose to get a right for the temple entry for the depressed class people, or to take water from the public wells, public tanks, or to have an access to the education, that means to schools. He gave them the name of Harijan, or the son of God. तो ये सारे पॉइंट्स आपको महात्मा गांधी एज अ सोशल रिफॉर्मर आपको मेंशन करना पड़ेगा. फिर आपको पूना पैक्ट के बारे में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, तो यू कैन हैव द एटलीस्ट 3 पॉइंट्स विद यू. फिर हु हैड फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो यू मस्ट रिमेंबर इट वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर इन 1930. सो दिस वाज हाउ the issue of
the issue related to the depressed class people get sorted out. When the civil disobedience movement was started, we can find कि हमारे जो डिप्रेस क्लास के जो लोग थे उन्होंने इस मूवमेंट में बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं किया था. अनदर ग्रुप ऑफ पीपल इन द सोसाइटी which did not show much enthusiasm to the call of the civil disobedience movement, it was that of the Muslims in the society. The Muslims. जब सीडीएम यानी कि जब सीडीएम के लिए कॉल दिया गया, when the CDM Civil Disobedience Movement was started, तो बहुत सारे हमारे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस remained lukewarm. ज्यादातर जो हमारे मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो हमारे शांत बने रहे, यानी कि दे डिड नॉट शो मच एंथुजियाज्म और दे डिड नॉट शो मच रिस्पॉन्स टू द मूवमेंट. एक्चुअली रीजन क्या था? पहला अगर हम देखें रीजंस, पहली चीज, मुस्लिम्स वर फेल्ट alienated from Congress after decline of the non-cooperation movement. Because we know, हमने पहले डिस्कस भी किया है कि non-cooperation movement it was started along with the demand for the खिलाफत, कि भाई जो भी खलीफा है उसकी टेम्पोरल पावर्स को प्रोटेक्ट किया जाए. इस डिमांड के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया था, लेकिन बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इट वाज सिंगल हैंडेडली कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी विदाउट द सेटलमेंट ऑफ द खिलाफत इशू. तो कहीं ना कहीं इससे जो मुस्लिम्स थे वो कांग्रेस से एलिनेट हो गए, यानी कि सेपरेट हो गए. दूसरा, from mid 1920s, the Congress came closer to more visibly Hindu nationalist organizations like the हिंदू महासभा. कांग्रेस जो है वो हिंदू महासभा जैसे जो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके बहुत क्लोज आ गई थी. relations between the Hindus and the Muslims
and the Muslims wasn't. हिंदूस और मुस्लिम्स के बीच की जो रिलेशनशिप थी वो बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही थी, और अपने अपने डोमिनेशन को असर्ट करने के लिए दोनों ही कम्युनिटीज के लोगों ने जो अपने जो प्रोसेशन थे, जो उनके रिलीजियस सेलिब्रेशंस होते थे, उसको उन्होंने बहुत पॉम्प एंड शो के साथ, यानी कि एक तरह से अपने डोमिनेशन को शो करने की दोनों ही कम्युनिटीज ने कोशिश की, विच हैड प्रोवोक्ड द क्लैशेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज एंड द कम्युनल राइट्स। ठीक है, तो दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में हमारा जो रिलेशनशिप थी वो खराब हो गई। दोनों ही कम्युनिटीज के लोगों ने अपने अपने रिलीजियस सेलिब्रेशंस को इस तरीके से सेलिब्रेट करना शुरू किया कि वो बहुत ज्यादा, मतलब इस तरीके से शो करने की कोशिश की कि दे वर मोर डोमिनेटेड देन द अदर्स। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट यह हुआ कि दोनों ही कम्युनिटीज के जो रिलेशंस थे और ज्यादा स्ट्रेन्ड होते चले गए, और कई जगहों पर, कई सिटीज में कम्युनल वायलेंस भी हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए। During 1927, the Congress and the Muslim League tried to renegotiate, दोनों ने फिर से रीनेगोशिएट करने की कोशिश की मोहम्मद अली जिन्ना, he was ready to give up his demand for separate electorates for Muslims, electorates for Muslims if Muslims were given reservation in the Central Legislative Assembly, and representation in proportion of the population in Muslim majority provinces। यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये इस बात के लिए तैयार हो गए कि भाई वो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को छोड़ देंगे, मुस्लिम्स जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को छोड़ देंगे अगर, पहली चीज, अगर मुस्लिम्स को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन दे दिया जाए, और दूसरा उन प्रोविंसेस में, उन स्टेट्स में जहां पर मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, उन स्टेट्स में
मुस्लिम्स को उनकी मेजोरिटी के हिसाब से, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए। एक समय ऐसा लगा कि भाई बात बन जाएगी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कंप्रोमाइज हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। बट ऑल होप्स ऑफ कंप्रोमाइज, ऑल होप्स ऑफ compromise broke when in 1928 in all party conference M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha strongly protested the idea of reserved constituencies for the Muslims। M.R. जयकर जो हिंदू महासभा के थे, उन्होंने मुस्लिम्स के लिए जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बात चल रही थी उसका उन्होंने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। सो ऑब्वियसली जिस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई, देयर वॉज एन एटमॉस्फियर ऑफ कंफ्यूजन, सस्पिशन, डिस्ट्रस्ट। ज्यादातर जो मुस्लिम लीडर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, दे हैड शोन देयर कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया। यानी कि वो इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित थे, वरीड थे कि भाई इंडिपेंडेंट इंडिया में मुस्लिम्स का फ्यूचर क्या होगा। एक ऐसे कंट्री में जहां पर हिंदूज की मेजोरिटी ज्यादा है, वो ये फील कर रहे थे कि कहीं आजादी के बाद उनके कल्चर को, उनके रिलीजन को कहीं हिंदूज डोमिनेट ना कर ले। सो दिस इज व्हाट अबाउट द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस टॉपिक से जो हमारा क्वेश्चन आता है, दोनों अलग अलग, मैंने आपको उस समय दलित्स के बारे में बताया, इसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन, यू कैन गेट वन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कि व्हाई डिड द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन रिमेन ल्यूकवार्म, ठीक है, व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो, गो थ्रू दिस टॉपिक क्लियरली। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम कलेक्टिव आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। By then you can just go through. Thank you and keep on revising, and good day ahead.